Let us discuss the strengths of the um, feminine energy. So, before starting, I hope you all know that we all have feminine and masculine energies in us, irrespective of our gender. So, a man carries a feminine and masculine energy, a woman carries a feminine and masculine energy. There are various names for it in different, spiritual um, areas or different spheres. Okay, especially up if you see the ancient cultures and civilizations, you're definitely going to find complementary and yet so opposite energies, in a union. Okay, so for example, yin and yang, how they're black and white, and how they're opposite, contrasting, and yet in union, you'll find them in union together. एंड yin and yang बहुत अच्छा, अगर आपको समझना है तो आप मूवी यू कैन वॉच द मूवी एवतार या एंड उसमें जो वाटर किंगडम में होता है ना, वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, मतलब जो वाटर किंगडम वाला जो सीन आता है, जो वाटर किंगडम वाला जो पार्ट आता है, व्हेन आप मूवी एवतार देखोगे तो उसमें एक वाटर किंगडम वाला, उसमें 4 किंगडम्स है, उसमें वाटर किंगडम वाला जो पार्ट आता है, उस पार्ट में आप देखोगे कि कैसे फायर किंगडम जो होता है वो वाटर किंगडम पर अटैक कर देता है. ओके, एंड वाटर किंगडम के पास देर आर 2 फिशेस. ओके, और वो यिन एंड यांग में होती हैं. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट, वन रिप्रेजेंट्स वाटर, द अदर रिप्रेजेंट्स मून. ओके, सो वाटर और मून का भी बहुत ब्यूटिफुल रिलेशनशिप होता है. अगर मून नहीं रहेगा, ठीक है, तो वाटर जो है वो व्हाट विल हैपन. लेट्स से अगर हम मून को हटा दें तो वाटर का कितना प्रॉब्लम हो जाएगा अर्थ पर. ओके, बिकॉज इट्स एक्चुअली द मून हु कंट्रोल्स द वाटर, सो दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ symbiotic relationship with each other, right? None can exist without the other. So वो बहुत अच्छी मूवी है टू अंडरस्टैंड द yin and yang. And then there's Shiv Shakti, there's yin and yang, and Ida Pingala even. Okay, हमारे कल्चर में बताया जाता है. And then masculine and feminine, of course, right? The main names for it. I'm forgetting the names. Just too bad at remembering stuff. Oh God. मतलब हर कल्चर में कुछ ना कुछ you will find it. Okay. So yes, so we all carry feminine energies in us. ठीक है, तो feminine की strength क्या होती है? So I am somebody who is more in my feminine energies. Okay, and I had such a damn time. I had such a damn time really, understanding if feminine is even, does she even have some strengths. Okay, so what is a feminine energy? So feminine energy means that yeah, she's on fire. I mean, yeah, she will never be, she's unique, she's separate. Okay, she's very much connected to her divine innocence. Okay, innocence is divine. Okay, wickedness is not divine. Okay, innocence is divine. So somebody who's more in their innocent energies, who's more connected to their divine innocence, is closer to God. Okay, and closer to God doesn't mean up there, it's inside you. आई नो ये बहुत क्लीशे है, और जब मैं ज्ञान सुनने बैठती थी, अब मैं I used to go to gurus or read enlightened masters, this cliche statement would always come, God lives inside. And I'm like, what God lives inside us? What? I would just never understand it. But yeah, as I am been on my spiritual journey, of course, God lives inside us, and it's just so difficult to really, make people understand how does that work. I mean, there is no other way you can say this.
that God resides within you. There is no better word and no better sentences other than this, that God resides within you. It's really not up there. I mean, there are gods up there, but it is also inside you. Okay, and they are your model and idols. Okay, gods up there are your models and idols, but at the end of the day, they reside within you. Okay, so yeah. Okay, so uh yeah, so I have really beaten myself over, while I was growing up, that I was weak, because yes, so feminine, if you're more in your feminine energies, you will be more sensitive, you'll be more empath. Okay, you are just, you just have a, you are, yeah, you just have a kind of motherly, um, figure to you. Okay, or you just carry some, I mean, you just carry love energies, you carry motherly energies, and you're very sensitive to life around you. Okay, and then of course you're connected to your divine innocence, you are sensitive, you are, yeah, so this is what is real feminine. Okay, and it has been, slowly and gradually, of course, swept away from the planet, thanks to invaders too, and education system too, and people themselves too. Okay, so while I was growing up, I really thought that I am a weak personality, or I am not that strong enough, because these are the cliche statements you will always hear. um, I mean, yeah, people in some way they really think that being insensitive or not feeling, not coming into feelings is a kind of a strength. Okay, not feeling bad stuff is a kind of a strength. Okay, but what people don't understand is ki, to connect to God, to connect back to God, you have to feel yourself. And when you have to feel yourself, you will also have to feel life around you. Okay, I mean, it's both ways. You open up. Oh, I just have this mosquito by my ear. So yeah, and yeah, I mean, feminine also, you know, has a heart for animals too. Okay, yeah, मुझे mosquito से याद So she also has a heart for, she's sensitive to life. She understands that, how even animals carry souls. Mosquito, rats, somewhere we don't see them in a good light. We don't see animals in a good light. Why? Because especially rat, because they were the cause of plague in our history. Okay, but and universe is so funny. He just made humans now the source of, spreading the plague, spreading the coronavirus now, today. I mean, 2 years ago, it's over. So, yeah, she has a heart for animals too because she's sensitive to life. Okay, it's just not, how we've just categorized animals to, into butterflies, and then other categories we have lizards and we have rats, and not so good creatures we would like to see them and call them, right? um so yeah, I mean, at some point of time, wolves, okay, were domesticated, as and brought up, you know they were domesticated, being being with uh, uh, they were domesticated being as dogs, right? क्या मुझे तो टाइम क्यों लग रहा था पता नहीं. तो हाँ, मतलब वुल्स को डॉग्स में डोमेस्टिकेट किया गया, उन्हें सिटी लाइफ में लाया गया, उन्हें सिटी लाइफ में रखा गया.
ठीक है, डॉग्स को। तो यार ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फेमिनाइन, ओके। शी हैज़ अ वे विद एनिमल्स टू, ओके। ओके, जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज में होगा ना, you will find that animals get attracted, and she has a way with animals too, okay. And honestly, I was a little scared while growing up from lizards and cockroaches and stuff like that. But yeah, as I complete my spiritual journey, I see animals in a completely different light now. Literally, I just see animals in a very completely different light. Okay, I mean, I'm a little scared too. A little scared, not that scared. Yeah. So somewhere we are also programmed to see animals in certain way. Okay. There are witches and wizards. I mean, witches, they're good witches too. They are good wizards too. There are bad witches too. There are bad wizards too. And you really you have to discern for yourself. Okay, who are the ones? So you will find that there are certain, good witches and wizards. You will find that they have a way with snakes. Okay, snakes are sensitive creatures. Okay, so yeah, they how normal public is just so afraid of animals. Okay, and they're so afraid of animals that sometimes they hurt animals even before them attacking them. एनिमल्स ने भी अटैक करा भी नहीं, और कई बार उन्हें अटैक कर दिया जाता है आउट ऑफ फियर, ओके। सो and people think that's masculinity, okay, but bro, you're just so low on your femininity, okay. जहाँ पर you can use love, you know you are attacking that animal. You don't have a way with animal, okay. You don't know how to communicate, or you've just lost, you're just too much, you're too full of yourself, okay. And you call it um, that you're masculine, because you can. And I have seen, क्या मैंने रस्किन बॉन्ड की इतनी प्यारी स्टोरी एक दिन पढ़ी थी यार. रस्किन बॉन्ड इज अ थिंग, मैन. I mean, he's so natural and he's so, yeah, it just, उनको पढ़ के ऐसा लगता है यार कोई अपना सा है. Literally, Ruskin Bond is beautiful. So I was just going through a story, No Room for Leopard, और उस स्टोरी में क्या होता है कि पहली बात तो of course he's from Missouri and everything, and he has been close to wildlife. उन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर लिखा भी है काफ़ी. तो क्या होता है कि फॉरेस्ट जो होता है वो कट जाता है, पास में होता है, एंड सो जो एनिमल्स होते हैं ना वो वैली के अंदर आ जाते हैं, ठीक है. मतलब तो कहीं ट्रैवल करके दे कम इनटू अ वैली फॉरेस्ट काइंड ऑफ. सो वहाँ पर ना कुछ हंटर्स होते हैं, ओके. मतलब ऑलरेडी एनिमल्स, आप देख रहे हो कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे टॉर्चर किया जा रहा है. एक जगह फॉरेस्ट काट दिया तो एनिमल्स चल के अब दूसरी सिटी में आ गए हैं. अब यहाँ पर भी हंटर्स आ गए हैं. Hunters, it's just, it's a sign of, they think that's a sign of masculinity, to kill innocent animal, okay. तो सो जो रस्किन बॉन्ड होता है, जो ऑथर होता है, वो उसने भी एनकाउंटर करता है लेपर्ड को, बट लेपर्ड उसे कुछ नहीं बोलता. और रस्किन बॉन्ड जो होता है वो लेपर्ड को कुछ नहीं बोलता. मतलब एक दो बार इनकाउंटर होता है उनका, ठीक है, मतलब थोड़ी सी दूर पे ही होता है. But they don't cross their boundaries, okay. They know that this is your boundaries. They always had a way, okay. Ruskin Bond and the leopard always had a way. But then there were 4-5 hunters who were roaming around in the forest, and at the end of the day they finally killed the leopard, ठीक है. और उसकी स्किन को ऐसे एक रॉड पर टांग कर they're taking it, and they're very happy, they're celebrating, and they think that's masculine to kill a leopard, it's an attacking dragon, it's to, no, that's toxic masculinity, ठीक है. इवन मूवीज़ में, बॉलीवुड में, मॉलीवुड, या कुछ हॉलीवुड इवन, मतलब फेमिनिन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. फेमिनिन की स्ट्रेंथ तो अभी एक्सप्लोर हुई ही नहीं है हमारे वर्ल्ड में. मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी इस चीज़ पर, बिकॉज मैंने खुद अपने आप को वीक समझा था, ओके, एज अ फेमिनाइन एनर्जी, ओके.
वाइल ग्रोइंग अप, बिकॉज आसपास के सब लोग ऐसे ही सोचते थे यार, यू नो। अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, आई मीन काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, and it just depends on you, okay, कि which world are you still in it, okay. बट वो पॉइंट था, वो बहुत डार्क पीरियड था जैसा लगता है। अगर आप बहुत एम्पैथ और बहुत सेंसिटिव तो आप लिटरली देखोगे, हम सब बात कर रहे हैं अबाउट 3 days 5 days शिफ्टिंग, बट कितने सारे कितने सारे चेंजेस एक्चुअल में आए हैं अर्थ पर, ओके, इन अ गुड वे, इन अ गुड लाइट, ओके। जो सच में स्पिरिचुअली अवेकन है वो देख सकता है, वो समझ सकता है, जो हमेशा से सालों से प्रोटेक्ट किया गया है बाय वेरियस स्पिरिचुअल लीडर्स, एवरीथिंग। मतलब वो वक्त में हम जी रहे हैं, एंड इट्स सच अ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स जस्ट कितना बुरा लग रहा है मुझे कि आधे लोग देख ही नहीं सकते हैं, आधे से ज़्यादा लोग शायद देख नहीं सकते हैं। तो ये भी शायद हिस्ट्री बुक में लिख दिया जाएगा, एंड देन I just hope people experience it. People just come out of themselves, अपने से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ी सी दुनिया देखो यार। तुम देखो what, God is moving his magical wand, okay? Have a look around you, okay? So Hollywood, Mollywood, Bollywood, इसमें कैसे फेमिनाइन को दिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, बोल्डली दिखाया जाता है। She's wearing a red lipstick, when she doesn't care. She's also becoming a very toxic masculine, okay? And you will always see that, always a man is coming to protect her. Just, or, there are, yeah, and it's just so stupid, okay? We have really built the idea of, in the world that um, women, kind of, yeah, the woman needs, she's always going to be rescued, okay. And yes, maybe she doesn't carry physical strength, okay, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट शी इज़ ब्यूटिफुल, ओके, इन उसकी बहुत सारी अदर स्ट्रेंथ है, ओके। एंड वो कोई आज तक दिखा ही नहीं पाया। मुझे तो ऐसी मूवी दिखी नहीं यार जिसके अंदर उन्होंने फेमिनाइन की स्ट्रेंथ दिखाई हो कभी, ओके। मतलब या आई थिंक ऐसी बहुत सारी मूवीज़ मिसिंग है हमारे वर्ल्ड में जहाँ पर फेमिनाइन की, शी इज़ क्रिएटिव, ओके। शी डजंट गो इनटू अटैकिंग मोड, आई मीन men are less creative, okay. I mean masculine is little less creative, okay. It is more of like what is needed and what should be done. I mean, you know they'll just attack and they always have one way of doing it. Feminine is very creative, okay. She has a way of dealing with things in a very creative way, okay. She always finds a way, she's like water, अब water को देखो, water कितना creative है यार। So जब वो फ्लो कर रहा होता है लाइक फ्रॉम अ रिवर, तो आप देखोगे स्टोन्स होते हैं उसके रास्ते में, ठीक है। ही डजंट स्टैंड अप कि आज तो मैं स्टोन को तोड़ के रहूँगा या आज तो ये गया, ही इज़ नॉट इनटू हिज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ओके। ही जस्ट वेरी क्रिएटिवली फाइंड्स हिज वे। इधर वो ऊपर से निकल जाएगा, इधर वो साइड से निकल जाएगा पानी, मतलब water just finds its way, it's soft and it's just so much, it's creative in finding its way, right? Even आप देखो spiders के web, okay, spiders भी आप देखो, it's a symbol of feminine energy, ठीक है। और स्पाइडर के जो वेब होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं उस दिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर द वेब, स्पाइडर वेब, इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा स्पाइडर वेब था वो, एंड उसमें स्पाइडर पीछे बैठा हुआ था, एंड आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर इट बट आई कुडंट कैप्चर इट बिकॉज इट्स जस्ट सो इनविजिबल, it's so invisible. How tricky is, how creative is feminine, it makes web invisible, okay. And बहुत बहुत तगड़ी से तगड़ी स्टॉर्म्स में ना आप उस वेब को हिला नहीं सकते हो। इट्स द मोस्ट सॉफ्टेस्ट, लाइक अब
यू विल नो फिंगर से ऐसे करोगे, करना मत प्लीज़, पर अगर आप फिंगर से ऐसे करोगे देन यू विल ऑफ कोर्स यू नो इट विल बी जस्ट यू कैन फाइंड इट ऑन योर हैंड एंड स्टफ लाइक दैट, बट इवन स्टॉर्म्स भी आती है तो भी उतना सॉफ्ट होता है, वो हिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ओनली अ सॉफ्ट थिंग लाइक वाटर यू नो कैन वो फिर भी थोड़ा डिस्ट्रॉय कर सकता है वेब को, ओके। तो एंड यू नो दैट आई वाज जस्ट रीडिंग स्पाइडर वेब को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, इट्स सॉफ्ट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक। तो मैं देख रही थी एक रिसर्च आई हुई थी एंड उस रिसर्च के हिसाब से स्पाइडर्स के वेब को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक माना गया, और उसे क्लोन करने का सोच रहे थे साइंटिस्ट कि इसे क्लोन कैसे करें यार, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, यू नो इट्स नॉट डायमंड, ओके। डायमंड तो ऑफ कोर्स आप सेंस कर सकते हो स्ट्रॉन्ग है, बट स्पाइडर वेब्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दिमाग नहीं है हमारे पास ये समझने का कि हाउ ब्यूटिफुल इज फेमिनाइन और कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर इन डिफरेंट वेज, ओके। सो या आई मीन या sometimes it just makes me so angry, you know, how feminine को कैसे you know weak समझा जाता है, just makes me angry, literally makes me angry. So yeah, so her strength is innocence, okay. Innocence क्या होता है? Actually innocence is very divine, I should call it divine innocence. Divine innocence मतलब एक simplicity, okay, and wickedness, cleverness, of course, you know, आप अपना दिमाग यूज़ करके you can always find a way, you know, and but you will miss the life, ठीक है। आप हमेशा you know you will just you know being wicked, you know, wicked people, clever people, what do? They always just find a way, you know, to you know to get what they want, okay, but they miss the whole life, okay. feminine is feminine is feminine knows how to surrender, ठीक है। जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ओके। शी समवेयर इज़ वेरी इंट्यूटिव, उसकी स्ट्रेंथ इंट्यूशन है। फेमिनिन की स्ट्रेंथ तंत्रा है। तंत्रा ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ये कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स इन सब ने आके इन्होंने बहुत कचरा मचा दिया लिटरली इंडिया में, एंड तंत्रा इज़ अ वेरी सीक्रेट प्रैक्टिस, ओके ओके। तो या हर स्ट्रेंथ्स आर इन तंत्रा, ठीक है। तो सो फेमिनाइन नो इसकी सरेंडर करना है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो अपनी बुद्धि से, अपनी क्लेवरनेस, अपनी विकेडनेस में नहीं आती है, ओके। शी लेट्स थिंग्स बी नेचुरल, शी लेट्स थिंग बी गॉड, शी लेट्स लाइफ बी लाइफ, ओके। एंड ऐसे देखने में लगता है कि यार विकेड लोग, क्लेवर लोग, तो यार ये तो निकल गए, यू नो, दे आर स्मार्ट पीपल, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। मुझे भी ऐसा लगता था एक टाइम पर, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे पास ये चिप ही नहीं है मुझे और मैंने क्या क्या सोचा बचपन में अपने बारे में, तो मेरे को लिटरली ऐसा लगता था कि यार इन सब के पास एक चिप है जो मेरे पास नहीं है। दे ऑल नो दो वेज ऑफ द वर्ल्ड, दे स्ट्रीट स्मार्ट एवरीथिंग, व्हाई एम आई नॉट लाइक दैम, यू नो। एंड ये भी this is I was being completely foolish, okay. Rather than finding strength in other people, I should have just closed my eyes and found strength and uniqueness and beauty in mine, okay. Literally मुझे मेरी spiritual journey जब मैं you know I walked my spiritual journey, I saw that, okay, how beautiful, and I carry strength in other ways, you know. एंड ऑनेस्टली अब तो मुझे विकेड लोग, क्लेवर लोग थोड़े फुलिश लगते हैं बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम गॉड, ओके। इट्स लाइक दे आर वन लेयर अवे फ्रॉम गॉड। मुझे लगता था ये जो चिप है, जो लेयर है, ये मेरे पास है ही नहीं, बट एंड मुझे लगता था कि शायद आई एम मिसिंग समथिंग, बट नो, आई मीन ये जो लेयर है, इट्स बिटवीन, it's more complex of a layer, okay, and it takes you away from God,
okay, somewhere, because you know how to do things, okay, and it's not always a good thing, you know. You knowing what to do, you knowing too much is not a good thing, trust me. I mean, you understanding too much is not a good thing, okay. You knowing it from your soul, that's a different thing, okay. But you know, you are working in a very programmed way. जो foolish, I mean जो wicked लोग होते हैं, they will work in a very programmed way, okay. For example, they will, you know, जैसे जैसे समझो, और इनोसेंस है क्या, इन मतलब जैसे मेरे तो इतने सारे एग्जांपल्स आते हैं, तो दिमाग में इतने सारे एग्जांपल्स एक साथ आते हैं ना, कौन सा दूँ, गाड़ी वाला। तो लेट्स से कि यू नो समबडी इज़ ट्राइंग टू यू नो कोई जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी की, ठीक है। तो एक विकेड इंसान हर ताकत लगा देगा, ठीक है, हर एक यू नो चीज़ लगा देगा कि भैया गाड़ी तो चाहिए चाहिए। एक भोला बंदा जाएगा, वो क्या करेगा, यार नहीं मिल रही, नहीं हो रहा, छोड़ो ना यार, ठीक है, नहीं करते हैं ना, नहीं लेते हैं ना, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। एंड बाद में शायद उसको वो पैसे यूज़ में आ जाए, शायद यू नो किसी और चीज़ में यूज़ में आ जाए। तो और विकेड और क्लेवर लोग आप देखो, दे आर मोर ड्रिवन बाय अदर पीपल इन देयर लाइव्स, ओके। तो ऐसा लग सकता है कि यू नो दे आर रेडी टू फाइट एनी वन एंड एवरी वन, एंड यू नो दे आर लिटिल सेल्फिश एंड ये वो, बट but their whole life is about impressing other people, you know, somewhere down the line. विकेडनेस, क्लेवरनेस थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अनकम्प्लेक्स चीज़ें, मतलब अवे फ्रॉम गॉड। सिंपल, जितने आप सिंपल, जितने आप भोले और यू नो जितने आप अपने डिवाइन इनोसेंस से कनेक्ट करते हो, उतना ही आप यू नो यू आर क्लोजर टू गॉड। आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी और ईजी और स्मूथ होती है, ठीक है। सो या एंड लिटरली मुझे मेरी इनोसेंस ने ही बहुत हेल्प करा टू कनेक्ट विद गॉड, ओके। आई मीन आई नेवर थॉट दैट आई विल यू नो I will live by and tell this story ever. Wow, I never thought I'll tell this story ever to people, but yeah, my innocence helped me connect to God. Shayad I was not very brainy, you know, but I had my intelligence in other dimensions, okay. I've seen I'm more intuitive than other people. मुझे टाइम लगा समझने में, मुझे अपनी जर्नी को समझने में टाइम लगा कि क्या, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत हालुसिनेट करती हूँ एंड आई एम जस्ट सो वियर्ड। मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं किसी और प्लैनेट से आई हूँ एंड मैं इतनी अलग क्यों हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि मैंने अपने प्लैनेट पे कुछ पाप कर्म किया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, दैट पीपल हैव सेंट मी हियर एंड नाउ आई हैव टू डील विद दीज स्टूपिड पीपल अराउंड मी. So that's what I used to think around me. I know I know it's stupid, but yeah. So I just never thought I'll live by or tell this tale to people. Like, yeah, but it's always had been easier for me to connect to God in my innocence, you know. Yeah, and my strength lied in intuition. Okay, I'm a very intuitive person, very, and I've honed on that, and I'm still honing on my you know intuition. And स्पिरिचुअलिटी में ये शक्ति, ये पावर्स जो होते हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब yeah, it's good and everything, there are other dimensions, but spirituality is not about attaining powers or opening your gifts, okay. Yeah, spirituality is more about आप क्या ज़्यादा हैप्पी हो, ओके, आप यू स्टिल क्लोजर टू डिवाइन, आप यू नो आर यू क्लोजर टू डिवाइन मोर. तो या रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ दैट, क्योंकि शक्तियाँ तो आप देखो डीमंस के पास भी होती हैं, ठीक है। तो बट यू नो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक गन जो एक टेररिस्ट के पास है, तो वो कितनी अलग बात है देन हैविंग अ गन, यू नो, जो एक पुलिसमैन के पास है,
Policemen will try to defend people with a gun, and terrorists will attack people with a gun. So it's not about Shakti, it's not about power. Spirituality is not about attaining power. Spirituality is about, becoming God at the end of the day. Knowing when to use your powers and knowing when not to use your powers. So that's divine, okay? That's divine. सो अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. तो आई हैव बीन वाचिंग शिव एंड शक्ति नाउ अ डेज इन कलर्स टीवी. तो वहाँ पर ना सो ऐसे ही डीमंस आ जाते थे शक्ति के पास. शक्ति वाज वाइफ ऑफ शिवा. ओके. So every, demons would come to Shakti and they would challenge her, you are so weak, they will tell her, you are so beautiful, how will you fight us? I don't know, मैंने एक बार दुर्गा चालीसा पढ़ी थी यार. I guess it's Durga Chalisa. No, it's not Durga Chalisa. क्या होता है वो? I don't know, something of a story. नहीं यार, that's not Durga Chalisa. What is that then? Durga Saptashati. Yeah, I guess. So I read a story of Durga Saptashati. Whatever. भूल गई यार. तो मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी. मतलब आई वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. तो उसकी मतलब यार, मेरे को तो 2 मिनट में गुस्सा भी आ गया बीच में कि जैसे वो डीमंस ऐसे बोल रहे होते हैं माता को, एंड वो फेमिनाइन को वो कर रहे होते हैं, इंस्टिगेट कर रहे होते हैं इन सम वेज. ऐसे बोल रहे होते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम हमसे क्या लड़ोगे, एंड यू आर सो सॉफ्ट वन, हाउ विल यू फाइट अस. ओके. और मैस्कुलिनिटी ऐसी होती है. मैस्कुलिनिटी, toxic masculinity, of course. Real masculinity will always, for example, Shiva is a real masculine. He knows the strength of feminine, and he protects her. He doesn't protect her basically. जैसे movies और Hollywood में खाते थे ना कि masculine is coming to protect her and stuff. No, he knows her strength. He lets her fight. Okay. ही लेट्स हर फाइट. कई बार उन्हें गाइड भी करते हैं शक्ति को, कि अभी मैं स्टोरी बताऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा. तो कई बार वो गाइड भी करते हैं शक्ति को. तो डीमंस आर इंस्टिगेटिंग द फेमिनाइन कि यू आर सो सॉफ्ट, यू आर सो ब्यूटिफुल, हाउ विल यू फाइट अस. ये वो. और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ऐसी तो होती है. हंटर्स भी तो ऐसे ही होते हैं. दे फील सो मैस्कुलिन किलिंग एन इनोसेंट लेपर्ड. They feel so masculine killing or attacking, women or children, in that sense. Okay. पर जो real masculinity होती है वो एक तो पहले औरत को वो नहीं समझती. I mean, ट्रू फेमिनाइन को सबसे पहले कमज़ोर नहीं समझती. ठीक है. उनको पता है कि रियल स्ट्रेंथ क्या है फेमिनाइन की. ठीक है. एंड वो उन्हें कई बार गाइड भी करती है. ओके. सो ये सब होता है. तो शिवा गाइड्स अप फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिन डजंट गेट इंस्टिगेटेड बाय इट. ओके. कि वट एवर दे इंस्टिगेट, शी सेज कि ठीक है युद्ध करते हैं, देखते हैं. ठीक है. आई मीन फेमिनाइन सेज दैट बैक टू देम, एंड देन शिवा गाइड्स अप. तो शिवा ने बताते हैं कि अभी युद्ध करने का वक्त नहीं आया. ठीक है. सो यू जस्ट, तो वो ऐसे ही वो अपनी माया रचते हैं कि कि अभी अटैक करने का वक्त नहीं आया. एंड देन ही टेक्स हर टू कामाख्या टेम्पल. ओके. एंड देन ही मेक्स हर प्रे एंड अटेन tantra powers. Okay, for a while. And then जब वो demons वो toxic masculine आते हैं, then वो अपनी powers use करके she's creative in ways. Okay. She might not use her strength. Okay. She's very creative in her ways. Okay, of doing stuff. Okay. So she knows how to do it. So yeah, I think Shiva and Shakti are a real example of real masculine, real feminine. Okay. And I have seen people, मैंने देखा है कि
टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा फेमिनाइन को वीक समझेगी, ठीक है, एंड और दे आर और द अदर काइंड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वुड बी दैट, I mean, or lower grade of toxic masculinity would be that you would attack her because you think you can attack her. You know, हमें लगता है कि हम अटैक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने वेपन्स बना लिया, हम अटैक कर सकते हैं एनिमल्स को, तो हम करेंगे इनोसेंट एनिमल्स पे। ये एक लोअर ग्रेड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। और देखा उनकी शक्ल, कितने कॉन्फिडेंट होते हैं यार, कितने स्टूपिड और कितने कॉन्फिडेंट लगते हैं, हैं करके हंसते रहते हैं डीमंस। और मैं तो आसपास देखती हूँ जितने लोगों को, तो मुझे तो ऐसे बहुत लगता है कि बहुत सारे लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में हैं। You know, I have seen people thinking that feminine is weak, you know, softness is weakness, okay, और मतलब डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती हैं, तो ये भी एक ग्रेड ऑफ इम्बैलेंस, चलो यार टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं बट इम्बैलेंस मैस्कुलिनिटी तो है ही, टू थिंक दैट फेमिनाइन इज़ वीक, यू नो, या उस पर तरस खाना, ओ बेचारी एंड ऑल ऑफ दैट। नो, शी हैज़ हर स्ट्रेंथ इन अदर वेज और तुम नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और फेमिनाइन को हमेशा फ्लावर से, यू नो, फ्लावर से कंपेयर किया जाता है। फ्लावर इज़ सॉफ्ट, शी यू नो हैज़ पेटल्स एंड एवरीथिंग एंड इट्स एंड शी इज़ फ्रेगनेंट, ओके, एंड शी इज़ ब्यूटी, ओके। एक पौधे की सुंदरता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके ऊपर एक फूल लगता है। वैसे तो ऑनेस्टली चाहे फूल लगे ना लगे, आई लव प्लांट्स। तो या फेमिनाइन जो होती है वो शी सीज द ब्यूटी ऑफ द whole thing. She cannot just find beauty in just one flower. Okay, she find beauty in stems and bark. मुझे सच बोलूँ तो मुझे barks बहुत पसंद है। Barks of the tree, I think they're so beautiful. I always feel like touching them. मैं अपने पार्क में जाती हूँ वॉक करने, नेबरहुड पार्क में, and I keep touching the barks of the trees and everybody looks at me कि लड़की क्या अजीब सी weird सी क्यों है, but I can't help it यार, इतने I don't know, this so barks are so beautiful. जो trunk of the tree होती है वो, I don't know, I don't know, it's just so attractive. It's so beautiful, you know. I don't know, this is so beautiful. I mean, yeah. Wow. I don't know. And I keep touching these trunks of the tree and everybody's looking at me, why is she so weird? मैं जा मुझे नहीं पता यार, मुझे just feel हो रहा होता है to touch the trees and plants sometimes. तो या हम किस पर थे, या कि सबसे पहले फेमिनाइन की स्ट्रेंथ, फेमिनाइन की सेंसिटिविटी को, उसकी इनोसेंस को, उस पर तरस खाना बंद कर दो लिटरली, ठीक है। और वो उसकी स्ट्रेंथ है यार, वो उसकी स्ट्रेंथ है, एंड यू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपको पता चलेगा लिटरली। आप इनोसेंस की वजह से आप एक लेयर दूर नहीं हो, आप एक लेयर पास हो गॉड के। इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट, ओके। और मैंने एक रिसेंटली एक रील पढ़ी थी इंस्टाग्राम पर, उसमें ऐसे ही लिखा था कि ज्ञानी तो गोते खाए और एक ज्ञानी तो गोते खाए लेकिन भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। लिटरली इनोसेंस में आप कनेक्ट कर सकते हो टू गॉड। इनोसेंस में इट इज़ नॉट ओनली ईजियर टू फॉरगिव, इनोसेंस डजंट मीन टू, यू नो, इट्स divine innocence means it's easier to forgive others, or divine innocence means it's also easier to forgive yourself. Forgive yourself. So divine innocence means easier to forgive others, divine innocence means easier to forgive yourself, you know. And तो ये दुनिया लिटरली इन्वर्टेड, मैं तो समझती हूँ बिल्कुल ही इन्वर्टेड, एकदम उल्टी है ये दुनिया। मुझे सच में ऐसा लगता था, मैं जब मुझे पैरेलल यूनिवर्स का पता चला, मुझे लगा मैं पक्का पैरेलल यूनिवर्स में रह रही हूँ। यहाँ कुछ तो करके, यहाँ पे लोग थोड़े से पागल नहीं हैं, पूरे पागल हैं यार, दे आर कम्प्लीटली इन्वर्टेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ऑपोजिट है, और मैं लोगों को ऐसे ही समझाती थी कि तुम्हें लगता है कि दुनिया पूरी पागल है, पूरी ऑपोजिट है, मतलब थोड़ी सी भी नहीं, पूरी ऑपोजिट है, जस्ट सो पागल लोग हैं यार लिटरली।
और मैं भी एक पल के लिए पागल बन गई थी स्टार्टिंग में कि हाँ शायद चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद हाँ ऐसी चीज़ें हैं. बट थैंक्स टू माई गुरुज एंड थैंक्स टू मी फॉर एजुकेटिंग माई सेल्फ. एंड मेरे को थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल थैंक यू और मेरे गुरुज को बहुत बड़ा थैंक यू. एंड या it's their it's their compassion that really helped me, find my way out of these stupid people around me. So yeah, I hope you understood the strengths of feminine. I just hope you did understood कि कैसे innocence एक kind of intelligence है. It's one wickedness is one layer away from God. Innocence is one layer closer to God. I know you innocent people might not know the ways of the world, but keep patience until 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 she makes it, until the innocence makes it.